Okay, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing good with your friends and family. Let's start our class with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. So, as I told you yesterday that we are going to have a quiz today, and I'm going to upload that quiz on University after we have completed our class. So you will be able to find that, and you have to submit me that quiz at 5 p.m. All right. You have to submit me quiz at 5 p.m. At 4, your all classes will be over. After that, you will attempt your quiz and submit me that before, like at 5. I will not accept any answer or any responses after 5. Am I clear? Murtuza Madni, I still cannot see you. Can you open your camera? Yes, I can see you now. Thank you. Okay, let's start our class. We have English today, and we have already discussed sentence structures. We have discussed sentence structure. We have discussed sentence structure type. Keep your worksheets in your hands. I've told you yesterday that keep your worksheets with you whenever we have class. Mariam Fatma, do you have your worksheet in your hands? Everybody show me your worksheets. Okay, so what we discussed in yesterday's class, we studied the 4 sentence types. We studied the 4 sentence, yes, very nice. We studied the 4 sentence types, in which we studied a declarative sentence. Who will tell me what is a declarative sentence? Who will tell me that? Zara Abbas, can you tell me a declarative sentence? Kanza, Misbah, and Mariam Fatma. Why I cannot see you? Mariam Fatma, can you open your camera? Yes, Zara, can you hear me? But I cannot hear you, Zara. Can you tell me what is declarative sentence? Zara, your mic is already unmute, but still I cannot hear you. There must be some problem at your end. Check that. Okay. Yes, Jafar Raza, I asked you to unmute yourself. Okay. Yes. Yeah, I can answer. Yes, Jafar, tell me. What is a declarative sentence? Simple sentence. Yes, a simple sentence or a sentence in which we give a statement, right? Can you give me one example of a declarative sentence? A simple sentence. Yes, I know that it's a simple sentence, but can you give me example of a declarative or a simple sentence? One example. Can you tell me a one sentence? 1 minute, teacher. Huh? I see an elephant. I see elephant. Very nice. Very nice. Very good. It's a good example. All right. The next one we discussed is interrogative sentences. Who will tell me what is interrogative? And Mariam Fatma, first of all, open your camera, and the second is I ask you to unmute yourself. So tell me, what is interrogative sentence? Yes, I ask you to unmute. Yes, Mariam. I'm saying an interrogative sentence is in which you ask questions like Yes. what is your name? It's Exactly. basically a Very question nice. sentence. Very nice. Okay. Now, the next is okay. The next we discussed exclamation sentence. Aris, no, Abdullah Alvi. I ask you to unmute yourself, Abdullah.
Abdullah, I ask you, yes. Yes, Abdullah, what is an Yes. exclamatory sentence or an exclamation sentence? Exclamation sentence. Abdullah, can Exclamation you speak a sentence little is loud because I cannot hear you? okay. Yes, Abdullah. Exclamation sentence is a Yes, Abdullah. exclamation sentence is a Abdullah, tell me wrong, no matter, but just tell me. Whatever you understood, just tell me. exclamation sentence is a Mariam, why your camera is not open? Yes, it's open now. Murtuza Madni. Yes, Zayan. I ask you to unmute yourself. Yes, Zayan. What is an exclamatory sentence? Exclamatory sentence is a word, is a question. No, no. We ask questions in interrogative sentences. We only ask questions in an interrogative sentence. In exclamatory sentence, we define our moods. Okay? In an exclamatory sentence, we express our feelings, we express our moods. For example, I told you yesterday that our sentence is, I got a ticket. Okay? I got a ticket is a simple sentence or a declarative sentence. But if I will say it like this, yay, I got a ticket. This thing shows that I am so excited because I got a ticket. And whenever you write an exclamatory sentence, you always put exclamation mark at the end of the sentence. Clear? The last one is command sentence, in which you give an order to someone. I think everything is clear right now. Now, let's move toward tenses now. Let's move toward tenses now. I'm going to show you one PPT. From today onwards, we'll start our tenses. And can you all see the PPT on your screen? Okay. Okay, in zero term, we are only going to study simple tenses. Okay, we are only going to study simple tenses. If you will understand this quickly, then maybe I will explain you further. I will explain you something more. But for now, we are only going to study simple tenses. Okay? Okay, basically, what are simple tenses or what are tenses and why do we use them? Tenses explains when something happened. Tenses explains when something happened. The most basic tenses are called simple tenses. Basically, tenses जो होते हैं वो explain करते हैं कि कोई भी चीज किस वक्त पे हुई थी. टेंसेस की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हम किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं या okay. या अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ I am going to school. अब if I will ask you कि ये जो मैंने सेंटेंस बोला है इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है तो आप मुझे नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि अभी आपने टेंसेस पढ़े नहीं है. बट अगर ये चीज मैं आपको उर्दू में बोलूं, इफ आई विल से लाइक दिस कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड? इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि मैं स्कूल गई थी, आई वेंट टू स्कूल, देन यू विल बी लाइक, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे बताएं इसमें कौन सा टाइम बताया जा रहा है, इसमें क्या ये प्रेजेंट की बात हो रही है? यू विल से नो, इट इज अबाउट पास्ट. ये तो पास्ट की बात हो रही है. मैं स्कूल गई थी.
उसके बाद आपका आता है थर्ड टाइम विच इज फ्यूचर. मैं स्कूल जाऊंगी. आई विल गो टू स्कूल. बेसिकली देयर आर 3 टाइम्स और 3 टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स जो अभी हो रहा है. जस्ट लाइक वी आर टेकिंग क्लास राइट नाउ. हम अभी क्लास ले रहे हैं, राइट? पास्ट में अगर हम जाएं, हमने सेंटेंस टाइप्स पढ़े थे. हमने सेंटेंस टाइप कब पढ़े थे? कल पढ़े थे. तो वो कब की बात हो गई? वो हो गई पास्ट की बात. वी हैव स्टडीड सेंटेंस टाइप्स येस्टरडे. तो ये कब की बात हो गई? येस्टरडे की, कल की बात हो गई. अब आपका क्विज होगा आफ्टर दिस क्लास. तो ये कब की बात हो रही है? फ्यूचर की. अभी ना अभी हो रहा है ना ये पहले हो चुका है, ये अब होगा आगे. तो ये फ्यूचर की बात है. यहां तक सबको क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? और एनी वन ऑफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग? Hassan, yes, I ask you to unmute yourself, Hassan. Yes, Hassan, what do you want to ask? Hassan, I cannot hear you. I don't understand this. And I still cannot hear you. Sir, I don't understand this. Hello? Hassan, I cannot hear you. Can you speak a little louder? Sir, I don't understand this. Yes, Hassan? I don't understand this. Hassan, wait. Hassan, what are you asking? I don't understand. I'm sorry, Hassan, I'm not able to understand what are you saying. Can you write your question? Wait. Yes, Inaya, I ask you to unmute yourself. I can't listen you, miss. Now you can hear me? No. Can you hear me now, Inaya? No, miss. Hello? I can't hear you. Inaya, now you can hear me? Yes. Okay. Zayan, you want to ask something? I ask you to unmute yourself, Zayan. Yes, Zayan. Teacher, my internet is so slow. So I will give the response long. You will give the response in? Long. All right. Okay. So we were discussing about tenses. तो मैंने आपको बताया 3 tenses होते हैं: present, past और future. Present में हम जो अभी हो रहा होता है उसकी बात करते हैं. Past में हम जो गुजर चुका है, जो हो चुका है, उसकी बात करते हैं. और future में जो होने वाला है उसकी बात करते हैं. The most basic tenses are called simple tenses. Just like I have told you, when we are going to make cake, you will find there are several types of cake, like chocolate cake, vanilla cake, fruit cake, strawberry cake, right? I have already told you this. Same goes with everything. Everything has a several types. Just like we discussed about sentence structure have different types. Same goes with the tenses. Tenses also have different types. Tenses also have several types. Yes, Inaya? You want to ask something, Inaya? Yes, Inaya. मिस, आज आपने कहा है कि 5 बजे से पहले क्या सबमिट करना है हमें? Before 5 p.m., after 4 and on 5, you have to submit your quiz. I will upload your quiz on university. Okay. Okay? Okay, miss. You are explaining the simple sentence or the past and future.
I am explaining a simple form of present, past, and future. Okay. We have already discussed sentences and sentence structure. Now we are studying tenses. Okay. So the most basic tenses are called simple tenses. Now let's move forward. There are three simple tenses: simple present tense, simple past tense, and simple future tense. All right. The first tense is simple present tense. When used for something, when we use simple present tense, we use it for something you always or usually do. ठीक है? Simple present tense basically use होता है किसी ऐसे चीज के लिए जो आप हमेशा करते हो या कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो. Who is doing this? I have already told you that you are not supposed to write anything on the screen. I think I was not clear. Whoever is doing this, I will make you out of the class. You are here to listen to me only. All right. So what is simple present tense? Used for something you always or usually do. All right. Just like you always wake up in the morning. Am I right? You always wake up in the morning. You always brush your teeth in the morning and sometimes after your dinner. And like these things going on. You go to school on your weekdays. ठीक है? तो इन sentences के लिए हम simple tense use करेंगे. और इन simple tense में verb की first form use होती है. वर्ब की भी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. ठीक है? वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स, which is first form, second form and third form. Okay, example. टू स्टडी इक्वल्स टू स्टडी, मतलब स्टडी जो वर्ब है इसके अंदर उसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, वो स्टडी ही रहेगा. आई ऑलवेज स्टडी एट स्कूल. I usually study at night. On Mondays, I study at my house. On most weekends, I study at the coffee shop. Understand? अब ये जितने भी सारे आपके sentences हैं, ये सारे usually और normal life के sentences हैं. ये ऐसे सेंटेंस हैं जो जैसे आई ऑलवेज स्टडी एट स्कूल, मैं हमेशा स्कूल में पढ़ता हूँ, ये हमेशा होने वाली चीज बता रहा है. जो ये जैसे सपोज दैट आई एम टेलिंग दीज थिंग्स, मेरे सेंटेंसेस हैं ये, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आई यू ऑलवेज स्टडी एट स्कूल, मैं हमेशा स्कूल में पढ़ती हूँ. मैंने ये नहीं बोला कि आई स्टडीड एट स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ती थी. नो, मैं हमेशा स्कूल में ही पढ़ती हूँ. ठीक है? ये मैं आपको वो फैक्चुअल चीजें बता रही हूँ, या मैं ये जब आप कोई फैक्चुअल या आप कोई ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जो आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड होती है, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. आई यूजुअली स्टडी एट नाइट, मैं रोजाना रात को पढ़ता हूँ. We have only 10 minutes left before our meeting ends. We'll wind up on simple present tense. Anyways, I usually study at night. मैं रोजाना रात में पढ़ता हूँ. On Mondays, I study at my house. हर मंडे को मैं अपने घर में पढ़ता हूँ. On most weekends, I study at the coffee shop.
ज्यादातर वीकेंड्स पे मैं कॉफी शॉप में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इन सारी बातों में से आपको कहीं भी ऐसा फील हुआ लाइक एट एनी प्लेस के जितने भी सेंटेंसेस हैं इसमें से किसी के भी अंदर कोई ऐसी चीज डिस्कस हो रही हो जो पास्ट से रिलेटेड हो या जो फ्यूचर से रिलेटेड हो, कहीं भी आपको ऐसा फील हुआ? नहीं ना, बिकॉज आई गेस हम सिंपल पास्ट पर आ रहे हैं। बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम हमेशा किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी यूजुअली जो आप रोजाना डेली रूटीन से रिलेट करते हैं। जिस तरह अब डेली रूटीन हो गया, अब आप क्या आता है फैक्चुअल चीजें, जैसे सन राइजेस इन द मॉर्निंग, सूरज हमेशा सुबह ही में निकलता है। क्या कभी ऐसा होता है कि सूरज रात में भी निकले? Is it possible? No, it's not. Sun rises in the morning. ये फैक्चुअल चीज है, इसके अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे। मून कम्स एट नाइट, चांद जो है वो हमेशा रात में ही आता है। Am I right? तो ये फैक्चुअल, जो फैक्चुअल चीजें, जो नेचुरल ट्रुथ्स हैं, जो चेंज नहीं हो सकते हैं, उनके साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में समटाइम हम वर्ब के साथ एस और ई एस भी लगाते हैं, एस और ई एस भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी गो टू स्कूल नहीं होगा, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, ही गोज टू द मार्केट, ठीक है। अब एस और ई एस आपका कहां पे ऐड होता है वो जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। He, she, any name. Who is doing this? He, she, any name. इनके साथ हमेशा एस और ई एस लगता है, ठीक है। It, they, we, but with I or you we don't add s और es. I और you के साथ हम s और es add नहीं करते हैं। I goes to school नहीं होगा, I go to school. You goes to school नहीं होगा, you go to school ही होगा। Am I clear to everyone? I know it's a bit difficult to understand at once. ये थोड़ा सा hard है first time में समझना, but sentence structure was a little harder than this, but we have हमने उसको understand किया और अच्छे से हमने उसे understand किया। We have understood it very excellently। और आज हमारा quiz भी है, तो we will understand tenses as well, ठीक है। ये थोड़ा सा hard है, but don't worry, we'll do it, ठीक है। So in today's class, we have only discussed about simple present tense and about tenses. How many tenses are there? And what do tenses do? And simple present tense. All right? All right. We have only 4 minutes left. Do any one of you want to ask anything? Mariam, do you want to ask anything? Any confusion? Yes, Aris? Because we have only 4 minutes left. Aris, I asked you to unmute. Yes, Aris. Yes, what do we have to do quiz on? Aris, I cannot hear you. What do we have to do quiz on? What, Aris?
Hello? Aris? Miss, what do we have to do with the quiz on? Aris, I cannot hear you there. What are you saying? What do we have to do with the quiz on? Aris, can you write your question on the chat box? Can you write it down for me so that I'll be able to read it and answer your question? Hassan Ahmed, same goes for you. Write your question in chat box. I'll read it fast. Whoever wants to ask me any question, write your question in chat box. Kissa Fatma, go. Write your question in chat box. I will read it. What do we have to submit quiz on? Okay. Aris, after this class, I will upload your quiz on University. You will get the notification after completing all your classes at 4 PM पे आपकी सारी classes खत्म होती हैं. उसके बाद आपने क्या करना है? आपने अपना quiz attempt करना है and before 5 PM मुझे वो सबमिट करा देना है. सबमिट एज इन आपने बस क्विज करके वहां पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट आपने प्रेस करना है. मेरे पास खुद ही आ जाएगा किसने क्विज कर लिया, किसने क्विज नहीं किया. ठीक है, देन आई विल गिव यू द रिजल्ट टुमारो. Kisa Fatma, what do you want to ask? Can you write your question? Mariam Fatma, what you don't understand? Mariam, I asked you to unmute yourself. Mariam, I asked you to unmute yourself. We have only 1 minute left, dear. Yes, Mariam, don't worry. Today is the first class of your tenses. Everybody, don't worry. ठीक है? Don't just बिल्कुल ये मत सोचें कि टेंसेस तो बहुत हार्ड हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया. नो, डोंट थिंक लाइक दैट. आप YouTube पे जाएंगे, on your school's channel you will find out the videos of tenses over there too. अब मैं आपके लिंक भी शेयर कर दूंगी यूनिवर्सिटी पे. यू विल बी एबल टू फाइंड आउट ऑन यूनिवर्सिटी टू. आप वहां पे देख सकते हैं. आप वहां पे जाके देखें, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको अंडरस्टैंड करें. हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पढ़ा था ना मरियम? सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सबको समझ में आया? इतना बेस्ट समझ में आया दैट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्विज टुडे. इस तरीके से टेंसेस इज आर लिटिल हार्डर बट स्टिल वी विल डू दैट. Keep faith in yourself. We will do that. Okay? Don't worry. Mariam, all right? Clear? Just remember one thing. There are 3 tenses: simple, past, future, and we are only studying present simple. We are only studying simple tenses right now, and I have told you simple present tense. और simple present tense में हम हमारे daily routine के बारे में बात करते हैं. ठीक है? Okay. The class time is almost over. Yes, Kissa. Yes, Kissa. Kissa, I will upload the link on University.